Good day everyone. Today we will talk about the reduction in syllabus of mathematics for class 9 for the academic session 2021-22. So जैसा कि आपको पता है academic session को दो terms में divide किया गया है, term 1 and term 2. So let us see कौन कौन से chapters term 1 में include किए गए हैं, कौन कौन से chapters term 2 में इंक्लूड किए गए हैं और इन चैप्टर्स से किन किन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है. सो द चैप्टर्स इंक्लूडेड इन टर्म 1 आर नंबर सिस्टम्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, triangles, Heron's formula, and statistics. So these 7 chapters are included in term 1. Now let us see कि इन chapters से किन किन topics को delete कर दिया गया है for this academic session. So from the first chapter, that is number system से representation of terminating, non-terminating, recurring decimals on the number line through successive magnification को remove कर दिया गया है और definition of nth root of a real number भी delete कर दिया गया है. So ये दो topics आपको नहीं पढ़ने हैं. From the second chapter, that is linear equations in two variables से problems on ratio and proportion को delete कर दिया गया है. From the third chapter, that is coordinate geometry से there is no reduction. ये chapter आपको पूरा cover करना है. From the fourth chapter, that is lines and angles से भी कोई reduction नहीं है, ये भी chapter आपको पूरा cover करना है. From the fifth chapter, that is triangles से भी कोई reduction नहीं है, ये भी chapter आपको पूरा cover करना पड़ेगा. From the sixth chapter Heron's formula से भी कोई reduction नहीं है, ये भी chapter आपको full cover करना होगा. From the seventh chapter, that is statistics, frequency polygons को delete कर दिया गया है. Mean, median and mode of ungrouped data is also removed. So ये 7 chapters आपको term 1 में cover करने हैं और इन chapters से किन किन topics को delete किया गया है हमने ये discuss किया. Now let us talk about the term 2 syllabus. So the chapters included in term 2 are polynomials, quadrilaterals, circles, constructions, surface areas and volumes, and probability. So these 6 chapters are included in term 2. Now let us see the topics which are deleted from these chapters. So from the first chapter, that is polynomial से remainder theorem with examples को हटा दिया गया है and statement and proof of factor theorem को भी delete कर दिया गया है. From the second chapter, that is quadrilateral से कोई भी reduction नहीं है, ये chapter आपको पूरा cover करना होगा. From the third chapter, that is circle से motivate, there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points को delete कर दिया गया है and motivate, if a line segment joining two successive points subtends equal angle at the two other points lying on the same side of line containing the segment, the 4 points lie on a circle को भी delete कर दिया गया है. So these two topics are removed from the circles. Now regarding the fourth chapter, that is constructions, construction of a triangle of a given perimeter and base angles को हटा दिया गया है for this academic session. Regarding the fifth chapter, that is surface areas and volume से कोई reduction नहीं है, ये chapter आपको पूरा cover करना होगा. Probability से भी कोई reduction नहीं है, ये भी chapter आपको पूरा cover करना होगा.
Now there are some chapters which are not included in both the terms. So these chapters are Introduction to Euclid's Geometry and Areas of Parallelograms and Triangles. So ये दोनों chapters टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही इंक्लूड नहीं किए गए हैं. So hope this information will be useful. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will reply. Thank you so much.